Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today I am going to discuss the phylum Platyhelminthes or the flatworms. So let's move on. Now dear students, the phylum Platyhelminthes, the flatworms. So here is the start of the triploblastic organization. इससे पहले हमने पैराजोआ को डिस्कस किया जिनमें कोई सिमेट्री नहीं थी. सिमेट्री के एतबार से दो तरह की, या बायलैटरल या फिर रेडियल. Bilateral हमने डिस्कस कर लिया. They belong to we have discussed the diploblastic organization in which we have discussed the phylum Coelenterata. Now in case of the triploblastic organization which includes the animals which possess the bilateral symmetry, तो उसमें बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर हमने तीन तरह के ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट किए थे. एसिलोमेट्स, pseudocoelomates and the coelomates. तो उसमें पहले the first one is the platyhelminthes. These are the animals which are acoelomates, triploblastic and acoelomates. So phylum Platyhelminthes or the flatworms. These are triploblastic acoelomates. मतलब है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेकिन इनके अंदर there is no body cavity. A means absent. Their basic characteristic flat का मतलब like a paper. So their body is dorso-ventrally compressed. The body is dorso-ventrally compressed like a paper. ठीक है? And they have got cephalization. They have got the cephalization means they have got a distinct head. Means they have a distinct head region. बाकायदा तौर पर पता चलता है इनके अंदर. और इनमें जो size है, size it ranges from few millimeters. Like if we talk about the smallest one, that is the planaria. It is 10 millimeter to certain meters in length. Okay, and now let us move. So on the upper side, so their body is made up of three layers. On the upper side, there is ectoderm, which forms the cuticle. Then there is the middle one, the mesoderm. It forms the packing around the organs. Around the mesodermal organs. And the third one, that is the inner, which is called endoderm. Okay. So, and in between there is a mesenchyma. ठीक है, जो मेसोडर्मल जो है ऑर्गन्स इनके अराउंड एक लूज सी लेयर है जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस में. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. So their digestive system
is sac type. जैसा कि हमने इससे पीछे भी देखा फाइलम नाइडेरिया के अंदर या सीलेंट्रेटा के अंदर sac type मतलब only one opening is there. Only one opening is there. और आपको याद है उसमें इवर्सिबल फेरिंक्स भी मौजूद है और माउथ वहाँ से वो निकलता है अपने प्रे को कैप्चर करता है फिर बैकवर्ड टू देम. और इसमें मौजूद हैं इंटेस्टाइन्स. It has also got intestinal system and pharynx and the mouth. Okay. And as far as their circulatory and respiratory and muscular systems, they are absent. They are absent usually. And if you talk about the nervous system, so here is the development of the first central nervous system. They have central nervous system with a pair, जैसे कि प्लेनेरिया में आपने पढ़ा था कि there is a pair of ganglia which acts as a brain, और फिर ladder like, there is a ladder like nervous system जिसमें दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं और फिर इस तरह से बहुत सारी लेटरल नर्व्स हैं. सो लेटर लाइक पैटर्न इनके अंदर बन रहा है. सो ये एवोल्यूशन के एतबार से ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है. एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर, अच्छा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें याद रखिएगा इट इज़ पुअर इन द पैरासाइट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ पुअर इन पैरासाइट्स. जो इनमें पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर चूँकि हैं वो पैरासाइट्स, उन्होंने बनी बनाई खुराक ही जो है वो हासिल करनी अपने होस्ट से, तो उनके अंदर ये एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है उनके अंदर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी इन द होमियोस्टेसिस, द फर्स्ट chapter of the second, the chapter number 15, excretory system. They have got the flame cells. Okay? They have got flame cells. These are bulb-like cells और इनका फंक्शन एक्सक्रीशन है. इनके अंदर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने एक और भी नाम दिया था, इट इज़ प्रोटोनेफ्रीडियम. प्रोटोनेफ्रीडियम क्लियर मीन्स के द क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग. द क्लोज्ड excretory tubules without internal opening. इनके पास वो सीलिया होते हैं येलोइश कलर के, जब वो इस तरह से बीट करते हैं सो दे फ्लिकर, दे लुक लाइक अ फ्लेम, सो दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड एज द फ्लेम सेल्स. होपफुली यू रिमेंबर देम. So I'm just going for a single flame cell, and here are the cilia. Interstitial fluid which moves inside through these openings, and this is the excretory
duct, clear, जो बाहर जाकर open होगी. And they, as far as we talk about their reproduction, so as in case of reproduction, they reproduce asexually by fission. आपको पता है कि प्लेनेरिया जो होता है जब उन्हें रिप्रोड्यूस करना हो तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है सेंड इट कंस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड ब्रेक इनटू टू. तो ये the upper end regenerates its lower end, while the lower end it regenerates the upper end. So this is called as a fission, clear? So, or simply we can say that the binary fission, the most common method is this. While they also reproduce sexually, and as well as sexually, if we talk about sexually, they have got the gonads, the male and the female gonads are यहाँ पर gametes बनेंगे. They will produce the sperms as well as the egg cells, which are also called as ova, and they are also mostly hermaphrodite, means having the both gonads in the same organism. इसमें जो लाइफ फॉर्म्स की अगर बात करें तो फ्री लिविंग भी मौजूद हैं, फ्री लिविंग, और ज़्यादातर इसमें वो जो पैरासिटिक्स भी हैं, पैरासाइट्स भी मौजूद हैं. फ्री लिविंग में हमारे बुक में एग्जांपल दी गई है प्लेनेरिया की, which is a fresh water, and parasites में like there is Tinea solium, which is known as the tapeworm, और इसी तरह से another example is there, Fasciola hepatica, the liver fluke, and also the schistosoma, which is called the blood fluke. And while the planaria, it is also called as Tugisia. इनके साथ में कॉमन नेम्स भी याद रखने अपने. सो दीज आर द एग्जांपल्स. और नाउ इनमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो पैरासाइट्स हैं, तो जो पैरासाइट्स हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है क्योंकि दे रिमेन अटैच टू द होस्ट. तो होस्ट के साथ अटैच होने के लिए इनको दो चीज़ें चाहिए. दो तरह की मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं. अटैच टू होस्ट बाय सक्कर्स और हुक्स, या तो इनके पास हुक्स हैं या फिर सक्कर्स हैं जिसकी वजह से ये अटैच होते हैं टू द होस्ट. और इन केस ऑफ द टाइनिया व्हिच इज कॉल्ड एज अ टेपवर्म, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, याद रखिएगा. बाकी सबकी अनसेगमेंटेड बॉडी है एक्सेप्ट दिस वन. They have segments, segmented body, लेकिन है प्लेटफॉर्म, ठीक है. और इसके जो लास्ट segments होते हैं they are called as the proglottids.
दे आर कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। और प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं दे कंटेन द टेस्टिस एज वेल एज द ओवरीज आर देयर। और इन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, व्हेन दीज सेगमेंट्स दे कैन मैच्योर, इन्हीं के अंदर जाइगोट मौजूद होता है। दे आर पास्ड वाया फीसिस, ये वहाँ से ब्रेक ऑफ होंगे, द ब्रेक ऑफ एंड पास्ड इनटू फीसिस। और वहाँ से फिर ये मूव करेंगे। तो ये एक इनका होस्ट है, ये सिंगल होस्ट। उसके बाद दूसरा होस्ट इनको चाहिए अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए। देन दिस आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट होस्ट where they complete the life cycle. The life cycle is completed. Dear students, इनके जो आम तौर पर जो इनके ये प्रोग्लोटिड्स होते हैं, they remain जो next host है इनका, that is the sheep or cattles, उनके जो वॉलंट्री मसल्स हैं, इन द वॉलंट्री मसल्स कौन से होते हैं? द स्केलेटल मसल्स, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। और इफ़ द फूड इज़ improperly cooked meat, it leads to इन्फेस्टेशन। इससे क्या होगी? इन्फेस्टेशन। अंदर जाकर ये जैसे उनको माहौल बेहतर मिलेगा, हमारे जब हम उनको इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाएंगे द ह्यूमंस, वहाँ पर जाकर के ये मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट लीड्स टू इन्फेस्टेशन। और फिर इनको रिमूव करने के लिए द केमिकल्स आर यूज्ड टू रिमूव देम। और दिस इज़ कॉल्ड एज डिसइन्फेस्टेशन। लेकिन इनकी एक ख़ास बात है, ये आम तौर पर के जो हम मेडिसिन्स खाते हैं उनके ज़रिए ये बाकी सारे सेगमेंट तो उतर जाता है, लेकिन हेड्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के साथ अटैच रह जाते हैं, ठीक है। एंड देयर हेड्स आर रिमूव्ड, इनको कम्प्लीटली रिमूव करना ज़रूरी है बाय एनीमा। अगर वो हेड्स रिमूव नहीं करेंगे तो वो रीजनरेट करके दोबारा से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। एंड दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ द रिसेप्टर्स which are present in the head region. They are sensitive to light. These are photo receptors. Clear? So ये डार्कनेस को और लाइट को सेंस करते हैं ये रिसेप्टर्स जो उसके हेड रीजन में मौजूद है यहाँ पर। सो दिस आता जिनको हम आई स्पॉट्स भी कहते हैं। दे आर नॉट आइज बट आई स्पॉट्स एज दे सेंस द लाइट। और इसी तरह से जो लिवर फ्लूक है, द लिवर फ्लूक द हेपेटिका फेस्यूला हेपेटिका, याद रखिएगा। इसके भी 3 होस्ट होते हैं, यानी कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स, ये भी उसी तरह से कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स। तो लिवर फ्लूक ये भी 2 होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो द मोस्ट प्रोबेबल आर द ह्यूमंस और अ स्नेल और शीप, ठीक है, द कैटल्स। और रहता कहाँ पर है? द लिव in the bile duct of the host। और इसमें
टाइनिया सोलियम यानी टेपवर्म, इसके जो होस्ट हैं इसको भी मार्क कर लीजिए, या तो ह्यूमन या फिर शीप या फिर पिग्स। ये दो इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। दीज आर द इंटरमीडिएट होस्ट। और ह्यूमन्स से दे आर द यहाँ का ये हमारा एंडोपैरासाइट है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर ये मौजूद होता है। और इनकी शीप्स या पिग्स, इनके जो वॉलंटरी मसल्स हैं वहाँ पर रहेगा, और इसी वजह से फिर जो इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड होगा ये इन्फेस्टेशन का बायस बनेगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली today's lecture have been clear. If there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. Until then, next lecture, Allah Hafiz.